कश्मीर वाला में आप सबका खैर मकदम है। आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सनाउल्लाह कुचै साहब, जो प्रोफेसर रहे हैं और उसके बावजूद ये हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ ऑन्कोलॉजी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी थे। अगर हम हमारे यहाँ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो दिन ब दिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स जो है बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन सेम जगह पर जो हमारे मरीज हैं उनका ये कहना होता है कि वहाँ पर ज़्यादा चार्ज करते हैं। अगर कहीं पर हमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 10,000 रुपये भरने पड़ते हैं तो वहीं अगर हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो वहाँ पर हमें काफ़ी पैसे भरने पड़ते हैं। इसी सिलसिले में आज हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर सनाउल्लाह कुचै साहब, जिनसे हम तफसीलन इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। फिर आपका खैर मकदम है कश्मीर वाला में सिर्फ तफसीलन जानना चाहेंगे। पहले हमारे यहाँ हम इतना तरक्की कर रहे हैं, मॉडर्न ज़माने की तरफ जा रहे हैं, वहीं जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ते जा रहे हैं। क्या आपको लगता है अगर प्राइवेट हॉस्पिटल्स बढ़ रहे उससे लोगों को कुछ फायदा मिलता है? Privatization is a very good step. You understand? So उसमें क्या होता है कि patient gets multiple opportunities. He or she gets a choice. To which hospital I must go, या मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करूँ या किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में करूँ, तो पेशेंट के सामने एक चॉइस रहती है। जैसे कोई भी जब डिजीज़ हम डायग्नोज करते हैं, इट स्टार्ट्स विद कंसल्टेशन ऑफ द डॉक्टर। हम कंसल्टेशन से स्टार्ट करेंगे। चाहे गांव में पेशेंट है या शहर में पेशेंट है, पेशेंट मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर के पास जाता है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। तो इस पे क्या होता है कि डिफरेंट गेम स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। एक प्रोफेसर 500 रुपीज़ फीस लेता है, दूसरा सेम प्रोफेसर 300 रुपीज़ फीस लेता है, एक और प्रोफेसर 200 रुपीज़ फीस लेता है। यू अंडरस्टैंड? सो इसमें वेरिएशन है। सो ऐसी असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में, ऐसे ही जैसे बी ग्रेड स्पेशलिस्ट हमारे गांव में है, जो हेल्थ सर्विसेज में है, दे आर एट पार विद असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ द मेडिकल कॉलेजेस। तो गवर्नमेंट मस्ट कम अप विद ए फिक्स्ड फीस। गवर्नमेंट का है फिक्स्ड फीस स्ट्रक्चर, पहले किया था एक टाइम, जिस प्रोफेसर का क्या होना चाहिए, असिस्टेंट प्रोफेसर का, बट नोबडी फॉलोज दैट इन प्रैक्टिस। सो इससे क्या होता है कि ये तो हो गया अब कंसल्टेशन फीस। Consultation fees must be fixed for every rank and it must be followed too. ये नहीं एक क्लिनिक डिफरेंट, इट शुड नॉट बी डिफरेंट। सो देन जो दूसरा मसला है, दूसरा मतलब है जैसे हमने डायग्नोस किया पेशेंट का कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, एनीथिंग है, सो वी गो फॉर टेस्ट्स, लैब टेस्ट्स। दूसरा मसला होता है टेस्ट। नाउ वी हैव टू डायग्नोज इट कि वेदर माय डायग्नोसिस करेक्ट और नॉट। तो उसमें क्या वी रेफर पेशेंट फॉर वेरियस टेस्ट। दो टेस्ट्स होते हैं, एक हो गई लैब टेस्ट्स जिसमें जैसे बायोप्सी हम करते हैं, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करते हैं, हीमोग्राम है, जिस LFT, KFT, थायराइड, व्हाटएवर दिस टेस्ट्स, उनका भी यही हाल है। एक लैब लेती है अराउंड 1000 रुपीज़, लेट से एक पैनल का, दूसरी लैब लेती है 750 रुपीज़। थायराइड का कोई देता है 350 रुपीज़, कोई टेक्स ओनली 200 रुपीज़। सो कैंसर में होता है एक और टेस्ट, उसको बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जो इट इज़ ए हाई स्टैंडर्ड ऑफ ट्रीटमेंट टेस्ट। तो उसके बहुत बड़े चार्जेस होते हैं। कोई लैब लेती है 10,000, 12,000, 15,000, कोई लेते हैं 5,000, 6,000। सो देयर इज़ नो यूनानिमस, उसमें भी रेट्स नहीं है। सो दैट इज़ ऑल्सो ए क्राइसिस। सो अब जो ट्रीटमेंट के बाद हम जाते हैं रेडियोलॉजी में। रेडियोलॉजी में CT स्कैनर्स है, MRIs है, PET स्कैनर्स है। लेटर से PET स्कैन तो हमारी सिर्फ एक ही यूनिट है इस वैली में, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस है, प्राइवेट में एक है। सो देयर इज अगेन ए वेरिएशन। शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट दे चार्ज 14,500, इन प्राइवेट दे चार्ज 23,000। सो दिस इज ए बिग वेरिएशन। ठीक, सो दिस शुड बी एड्रेस्ड टू। ठीक, तो अच्छा हो गया, ये हो गए डायग्नोस्टिक में लॉट ऑफ वेरिएशन। अच्छा, अब आया आयुष्मान भारत।
अब हम जाएंगे ट्रीटमेंट पर। तो ट्रीटमेंट के दो ऑप्शन है एक पेशेंट के पास, या तो वो फॉल करता है आयुष्मान भारत में, या अगर वो पेशेंट आयुष्मान भारत में है तो कोई टेंशन नहीं, ऑल टेंशन आर गॉन, सिर्फ बिकॉज ट्रीटमेंट विल बी फ्री, ऑल ट्रीटमेंट विल बी फ्री अप टू 5 लाख रुपीज, सो दैट वी नो, चाहे सर्जरी हो, उसमें कीमोथेरेपी है, रेडियोथेरेपी है, व्हाटएवर। लेकिन अगर वो आयुष्मान के बाद आउट जाता है, आयुष्मान में उसका ट्रीटमेंट नहीं होता है, सो फिर आती है सर्जरी उसकी, तो उसकी सर्जरी जाएगी अब प्राइवेट में। व्हेन दैट पर्सन गोज टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन, जैसे गॉल ब्लेडर अगर हम लेंगे, सिंपल गॉल ब्लेडर, एक लेडी को या एक मेल को गॉल ब्लेडर निकालना है, एक इंस्टीट्यूशन उसको करेगा 15,000 चार्ज, दूसरा करेगा 25,000 चार्ज, तीसरा करेगा 50,000 चार्ज। प्रोसीजर सेम है, whether it is laparoscopic this cholecystectomy or it is open cholecystectomy, the rate is very different. Expertise of hand जो है ना, that is okay, we welcome that, लेकिन still it is to be fixed, it is to be fixed, यानी patients have to cut a sorry figure। जैसे एक पेशेंट को हमने गॉल ब्लेडर करना है, को somebody will charge 50,000, अगर उसकी सेम पेशेंट है दूसरा that goes to another institution, that will charge only 20,000, so there is a big difference of 30,000 rupees। So this is for a poor family and for a middle class family, this difference is a very big distance। सिंपल चीज हम लेंगे, अगर किसी को कैथेटर प्लेस करना है, वो प्राइवेट अगर ये आयुष्मान भारत में नहीं है, प्राइवेट में आप गए पेशेंट, सो सिंपल कैथेटर प्लेसमेंट, really speaking, at times I am not a surgeon, I feel ashamed कि what private institutions are doing, sir, placement of catheter they are charging 50,000-60,000 rupees। आयुष्मान की बात we have done that कि अगर उसके अंडर आता है तो it is okay, free treatment, free surgery, ठीक। अगर आयुष्मान के भारत आउट जाता है, let us take now cancer treatment। अगर कोई उसमें एक ग्रुप आता है ट्रीटमेंट का, रिसर्च मॉलिक्यूल जिसको हम बोलते हैं, मोस्ट डॉक्टर्स जैसे हम आयुष्मान भारत में जाते हैं तो वी हैव टू यूज जेनरिक these brands, we cannot use research molecule branded जो item है, that as per parliament guidelines that cannot be used। लेकिन जब हम कास्ट पर जाते हैं, अब जेनरिक में क्या मसला है, there are 10-12 companies making same molecule and most of them are substandard। What as head of department I have seen in my practice, that many patients whom we would expect they would become okay, they don't respond to that treatment, generic form treatment, and there is always, whenever we do a round, there is always a crisis. Oh, this bed number 7, oh very sad, he has received generic drugs and they do there, so there comes the efficacy। Government must make up again a policy that how to check the standard of drugs, of generic drugs, you understand? जो जन आयुष्मान, जो आयुष्मान भारत, जो उसके अंडर ड्रग्स आते हैं, देयर क्वालिटी हैज टू बी चेक्ड, you understand? अब उसके बाहर अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल डज नॉट फिट इन आयुष्मान भारत, जैसे आयुष्मान भारत ने इस डिजीज के लिए ए प्रोटोकॉल दिया है एंड डॉक्टर डिसाइड्स नो आई विल गिव बी प्रोटोकॉल, या अगर वो बी प्रोटोकॉल पर जाता है जो आयुष्मान भारत में नहीं, उसकी रेट से वेरी हो जाती है। सेम इंजेक्शन विच कॉस्ट 40,000 rupees, another person will give you 13,000 rupees, you understand? So there is a big variation, such a variation that what happens in private, those patients who go in private institutions, on injection the rate is written 40,000 rupees, they will charge 40,000 rupees, they will charge 40,000 rupees, same injection can be got in 23,000 rupees। So this variation, you understand, this variation in rates of drugs, in variation rates of procedures, surgeries, and difference in the variation of consultation fees,
You understand? This has to be maintained in such a manner that there is no disparity. You understand? Yeah. Patient must feel comfortable. He must feel that I am not cheated. You got my point. Yeah. So patient must understand, no, if I go to this institution, rate is fixed. Whether I go to A institution, whether I go to B institution, whether I go to C institution. So rates must be fixed for every procedure. So how to do it? Governments must form a team of experts. Experts should be from surgery, experts should be from medicine, various streams of super specialties, and they should sit together, frame guidelines, what procedure should cost what, and what investigation should cost what. You got my point. Yeah. So that is the only way to address this. I should call it as a menace, where poor people are cheated of. They have to bear, the patient has to bear the brunt of this. Now, so beyond this, I have a small request for doctors. Now, you know, every company, whether they sell drugs, whether they sell investigations, whether they sell equipments, there is a trend that they give compliments to doctors. As head of department, I have an experience that most companies, they will come to give compliment to the doctor. Where from does this compliment come? This compliment comes from the pocket of the patient. So this is not, most doctors say this is our right to receive the compliment. No. This comes, if a company sells paracetamol, let us say, and cost of that paracetamol is 1 rupee. That company comes to you, that gives you some compliment. It may cost 500, it may cost 5,000, 5 lakh, that is not my tension. Where from does this company get this compliment? Company will not get it from heaven. It comes from the pocket of the patient. Who buys that paracetamol? You understand? Yeah. So that compliment again must go to the patient. If the now you cannot stop the company from branding the item and branding the rate as such. Now, first of all, compliment should not be there. Why should you please another person give a compliment? Why? It should not be there. Number first. Now, God forbid if it is there, my theory is this compliment must go to the patient. It must go to the hospital. You understand? So that is another part of the list.